So we are going to discuss about introduction to molecular docking. Okay, so molecular docking introduction. सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए about what is docking, what is ligand, what is receptor, what is protein, like this. Okay, so docking is an attempt to find the best matching between two molecules. डॉकिंग का मतलब है कोई भी दो मॉलिक्यूल के दरमियान उनके दरमियान कोई इस तरह की इंट्रैक्शन को हम फाइंड करें जो सबसे बेस्ट इंट्रैक्शन हो, उसे हम डॉकिंग कहते हैं। ठीक है, डॉकिंग इज अ मेथड विच प्रेडिक्ट द प्रेफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ वन लिगैंड when bound in an active site to form a stable complex. You know, uh, डॉकिंग हमेशा दो चीज़ों के दरमियान होती है। वन शुड बी वन मे आर मे बी प्रोटीन और मे बी एनी अदर कंपाउंड, कुछ भी हो सकता है, कोई भी दो मॉलिक्यूल के दरमियान हो सकता है। दिस इज जस्ट लाइक ए लॉक एंड की। ठीक है, जस्ट लाइक लॉक एंड की। आपके पास एक की है, एक लॉक है। एक लॉक के लिए हमेशा उसी की जो स्पेसिफिक की होती है वही लगती है, ऐसा ही है। बाकी की से वो नहीं खुल ताला ओपन लॉक ओपन नहीं होता। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ डॉकिंग कि एक हमारे पास लॉक है, लॉकर है, और एक हमारे पास की है। सो ओके, सो कंसिडर ligand is the key and the complex or and the protein that are interacting with the ligand is log. Okay, drug discovery, in case of drug discovery हम मोस्टली हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। ड्रग डिस्कवरी के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मॉलिकुलर डॉकिंग। टेक years to decade for discovering a new drug and very costly। जो ड्रग डिस्कवरी है, डिस्कवरी जो कन्वेंशनल मेथड है, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है एक ड्रग डिस्कवर करने में। So nowadays bioinformatics is helping to boost up the drug discovery। कैसे? जिस प्रोसेस को पहले 5 to 10 years लगता था, अब ये विदिन विदिन 1 month और विदिन 1 year आप इसको कंप्लीट एक प्रोसीजर से गो थ्रू करके आप ड्रग डिज़ाइन कर सकते हैं। Effort to cut down the research timeline and cost by reducing wet lab experiment, use computer modeling। हम कंप्यूटर मॉडलिंग को क्यों यूज़ करते हैं? ताकि जो लैब वर्क में रिसर्च लेबोरियस वर्क है या टू मच मच कॉस्टली होता है, उसको या टाइम जो हमारे पास है उसको रिड्यूस करने के लिए हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, देन ओके, here was the okay, so here is the lock and key, just like लॉक एंड की आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी। दिस इज जस्ट लाइक डॉकिंग। डॉकिंग क्या है? एक लॉक है आपके पास एंड की है, ये उसी की के अंदर ही दिस इज की एंड दिस इज लॉक। सो इस सपोज करें इस लॉक के अंदर इन तीनों में से कौन सी की फिट आएगी जिसकी वजह से लॉक खुलेगी? डेफिनेटली ओ नो। अगर हम इस कलर को के सर्कुलर को ले लें, it will not open the lock. If we use this, then again, if we use this, yes, this can bind and this is mostly suitable for this lock. So out of these molecule, this molecule has affinity to bind with the lock. Okay, just like this. Then coming to the next slide, this is another example of a protein and ligand molecule. uh, Suppose kare, this is our target protein and this is ligand. Target protein means the protein that we have, let's suppose we have uh,
structured, we have predicted the structure through homology modeling in previous lecture. जो previous lecture में हमने जो predict किया था 3D structure, that was our target protein, और उसी प्रोटीन को हम नेक्स्ट स्टडी के अंदर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो अब हम उसी टारगेट प्रोटीन को क्योंकि उसी उसमें पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि प्रोटीन के बाद डाउन स्ट्रीम बायोइन्फॉर्मेटिक्स हम एनालिसिस करते हैं, जहाँ से स्ट्रक्चर वैलिडेट होने के बाद हम डाउन स्ट्रीम एनालिसिस करते हैं। सो वन ऑफ द डाउन स्ट्रीम एनालिसिस इज द प्रोटीन लिगैंड इंटरेक्शन, okay, docking. So now we are using our target protein and we are checking its interaction with ligands, different ligands, okay, and this is the procedure is known as docking. अब हम इस docking के जरिए ये target और protein को हम आपस में complex बना रहे हैं, okay. So similarly this is again same thing, इसको यहाँ पे explain किया कि this is again same thing. So what is the aim of molecular docking? What is the aim of molecular docking? To achieve an optimized conformation for both receptor and ligand and the relative orientation between protein and ligand such that the free energy of the overall system is minimized. What is the aim of molecular docking? Molecular docking, we know there are several types of protein as well as there are million and trillion types of ligand molecules in a living system. अगर आप एक लिविंग सिस्टम को कंसिडर करते हैं तो उसके अंदर मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जस्ट लाइक दिस। सपोज करें इफ दिस इज ए प्रोटीन, then there will be several small molecules around this, and of these molecule we have to find which one is interacting with the active side of our target protein. So to find this is the aim of molecular docking that can be achieved by computational biology. अगर हम इसको कन्वेंशनल मेथड की तरफ लेके जाए, मींस एक्सपेरिमेंटल की तरफ लेके जाएं, तो वी हैव टू चेक each molecule in the lab for their interaction with our target protein. So if there are thousands of molecules, then it is impossible to check each molecule's interaction with our target protein. But in case of computational molecular docking, we can screen thousands and thousands of ligands for its interaction with our target protein. This is the simplest and the most important features of computational molecular docking. Is this clear? सबको clear है कि what is the importance of molecular docking? Let me know if there is any question from this slide. Okay, successful docking method search a high dimensional spaces effectively and use a scoring function that's correctly rank candidate docking. What do? We find a specific ligand that's interact with our proteins, with our target protein with a minimum energy. हम ये देखते हैं इन सब में से कौन सा लिगैंड ऐसा है जो हमारी प्रोटीन के साथ मिनिमम एनर्जी में कॉम्प्लेक्स बनता है, मींस जो लिगैंड प्रोटीन लिगैंड कॉम्प्लेक्स बनता है उसकी एनर्जी मिनिमम कौन से लिगैंड के साथ होता है। क्योंकि द मिनिमम एनर्जी एनर्जी बियरिंग कॉम्प्लेक्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो, इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द हायर एनर्जी कॉम्प्लेक्स। सो अगर आप एक इन्वायरमेंट में एक प्रोटीन आप ऐड करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स है, तो इट विल बाइंड विद स्पेसिफिक लिगेंड्स
ओनली दोस लिगेंड्स जिसके साथ उसकी एनर्जी मिनिमाइज हो जाए, मिनिमम एनर्जी रहे, फ्री एनर्जी। ठीक है। सो then importance of molecular docking. What is the importance of molecular docking? There are three important steps. The prediction of binding affinity, that's known as scoring function. हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो प्रोटीन है, प्रोटीन और लिगैंड है, उसके दरमियान एफिनिटी क्या है। दिस इज स्कोरिंग फंक्शन। स्कोरिंग फंक्शन के ज़रिए हम स्कोर देते हैं। अगर हमारे हमारे टारगेट प्रोटीन के साथ हम हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ लिगेंड्स को हम कंपेयर करते हैं और चेक करते हैं कि उनकी बाइंडिंग एफिनिटी कितनी ज़्यादा है। ठीक है। You know, the binding affinity is the affinity that's attract two molecules to each towards each other. जितनी binding affinity ज़्यादा होगी, इसका मतलब है there will be strong interaction. If the binding affinity is low, then there will be a weak interaction. Okay, so the first step is the identification or the prediction of the binding affinity of protein with ligand. Then the second step is the identification of ligands building geometry, that's known as the pause in the binding site. Second point ये है कि binding mode. Okay, binding mode. You know what is the binding sites? What is the binding site? Binding site is the active site or the active region of protein in which a ligand molecule uh, fits and attach. ठीक है, उसको हम बाइंडिंग साइट्स कहते हैं। सो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ जो हमारे पास लिगेंड्स हैं उसकी ज्योमेट्री इम्पॉर्टेंट है। ज्योमेट्री मीन्स उसकी डायरेक्शन एक्स वाई के हिसाब से या थ्री डायमेंशन के हिसाब से उसकी ज्योमेट्री क्या है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। Because the geometry is the only thing that determine that is it is suitable for the binding side of protein or not. हम जब भी हम कोई इंटरेक्शन देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि दो चीज़ें देखते हैं, लिगैंड की ज्योमेट्री और जो एक्टिव साइट है, एक्टिव बाइंडिंग साइट है, उसकी उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या ये एक दूसरे के लिए सुइटेबल है। जस्ट लाइक की लॉक एंड की हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लॉक एंड की के की तरह एक हमारे पास की है और अगर एक हमारे पास लॉक है, तो हमारे हमारे पास अगर डिफरेंट कीज हैं तो वी विल चेक ईच वन। ठीक है, हम हर एक की को चेक करते हैं कि कौन सा की है जो उसके साथ जो लॉकर के लिए सुइटेबल है और लॉकर को अनलॉक करे, खोल दे। ठीक है। रेशनल डिजाइन ऑफ ड्रग, दैन एट द एंड हम डिजाइन करते हैं डिफरेंट ड्रग्स को। ठीक है, ड्रग डिजाइन करने के लिए पहले दीज आर द इम्पोर्टेंट। ओके, देन here is the types of docking. There are two major types of docking. One is the rigid docking, that's are known as lock and key. जिस तरह हम I think you have already read in during your intermediate lock and key model. लॉक एंड की मॉडल पढ़ा है आप लोगों ने। लॉक एंड की मॉडल जिसके अंदर अकॉर्डिंग टू द लॉक एंड की मॉडल द enzymes and the substrate act as lock and key। मीन्स जो की लॉक हैं वो भी रिजिड फॉर्म में हैं और जो सबस्ट्रेट हैं वो भी रिजिड फॉर्म में हैं। So that's known as a lock and key model. Means there is no any flexibility in the active side of proteins and the enzyme or the substrate. So in rigid docking, the internal geometry of the both the receptor and the ligand are treated as rigid. हम ये consider करते this is rigid, just like this. अगर in case of this is the example. Let's suppose this is the active side of protein. This is the active side of protein and this is ligand. Okay, अगर ये rigid हो then it will not change.
इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा एक्टिव साइट के अंदर। अगर आप सब में देख रहे यहाँ से यहाँ तक, there is no any change in the receptor as well as active side of protein. इवन जो receptors को की ज्योमेट्री हम चेंज कर रहे हैं, ज्योमेट्री को हम चेंज कर रहे हैं, शेयर डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली exactly fixing to the active side. Okay, so in this condition, इस कंडीशन के अंदर इनकी इंट्रैक्शन मिनिमम होती है। The second model is a flexible model that is known as induced fit model. Induced fit model के अंदर we consider that the ligand as well as the receptor both have flexibility in their binding sites. हम ये consider करते हैं कि इनके binding sites के अंदर flexibility है। So for example, this is the protein, this is active site, and this is the ligand. And if you are looking here, these are the three possible interaction of these two molecules. This may be bind in this form, इस फॉर्म में भी बाइंडिंग हो सकती है। इस फॉर्म में अगर बाइंडिंग हो जाए तो ये देखिए द एक्टिव साइड इज चेंजिंग। इस कंडीशन में जो एक्टिव साइड था पहले, यहाँ पे जो एक्टिव साइड था दैट्स चेंज। सिमिलरली if the molecules comes in this direction, then the protein active site will change just like this so that it may fit the ligand molecule in its active site. Okay, so similarly, if the ligand molecule direction change into another geometry or the another structure, then the protein again it will change its active site. So these are the two types of uh, docking. Is this clear to everyone? Is there any question? No, sir. No, No, sir. sir. Okay. So then docking can be between the docking that's maybe between protein and ligands molecule. Ligand molecule may be small molecules that can be any chemical molecules, for example carbohydrate, glucose, lipids like this. ठीक है, ligand may be any molecule, कोई भी जो small molecule है उनको हम ligands कह सकते हैं। Then that's maybe protein and protein. The docking can also be between protein and protein. This is known as protein-protein interaction. Just like हम देखते हैं कि कौन से प्रोटीन किस प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. For example, in one of my research project, my BS research student has done some interaction between cotton resistant genes with the viral with some viral protein. ओके, सो हमने उस रिसर्च के अंदर हमने देखा कि ओवरऑल हमने सारे रेजिस्टेंट जीन्स कलेक्ट किया कॉटन जीनोम से। उसके बाद हमने सिमिलरली जितने भी वायरल जीन्स थे देयर वर आई थिंक 8 to 10th 7 to 8 वायरल प्रोटीन। सो वी we check interaction of each viral protein with with the each resistant genes. Okay, so in this way we have found more than 100 of interaction. Okay, so then out of those interaction we have screened most stable interaction. फिर उसके बाद हमने फाइंड किया कि कौन सा एक्टिव रीजन है और कौन कौन से अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व हैं रेजिस्टेंट जीन्स में और वायरल प्रोटीन के अंदर जिनकी वजह से आपस में इंट्रैक्शन हो रहा है। सो that was example of protein interaction. Similarly, my another student has worked on uh, another with this protein ligand interaction, in which we have selected one the protein
and for its interaction with ADP molecule. हमने again एक NBS protein हमने select किया, उसे हमने homology modeling के ज़रिए as well as de novo based we have predicted the 3D structure. Then we have checked its interaction with ADP as well as ATP. So we have found that the our protein has strong interaction with the ADP molecule. ठीक है, उसके अंदर हमें ये क्लियर हुआ कि ये कि हमारी हमारी जो प्रोटीन है दैट्स ओनली दैट्स ओनली इंटरेक्ट विद एडीपी नॉट एटीपी एटीपी के बजाय वो एडीपी के साथ उसकी बाइंडिंग होती है सिमिलरली this is another types of docking we have planned to perform this like docking because we have this target protein as well as nucleotide. So still we did not perform this, but we have aimed to do like this. So these are the figures. This is the protein and nucleotide. Actually, these proteins are transcription factors. You know what is the function of transcription factors? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ऐसे ऐसे प्रोटीन हैं जो जाके डीएनए के साथ बाइंड करती है ठीक है जिन्हें especially promoter regions के ऊपर there are different types of cis acting sites उन sites के ऊपर कुछ conserved sequences होते sequence कुछ conserved regions होते हैं प्रोटीन promoter region के अंदर उन conserved region में जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो जाके बाइंड करती है सो वन ऑफ a docking can be we can also check transcription factors and its binding site in the promoter region इस तरीके से भी हम before going to the experimental work we can screen the the protein as well as its target site ठीक है is there any question from this this is the small this is the example of protein ligand molecule if you are looking at this is a small molecule and this is the protein this is small molecule and in this case these are the two different protein actually interacting with each other and in this case this is the protein and this is DNA okay so these three types of docking are showing interaction between one molecule to another molecule okay is this clear यहाँ तक clear है okay so here is the key stage in docking molecular docking के अंदर key stage कौन कौन से हैं what is the flow chart of flow chart in molecular docking so here is the flow chart what we need a target protein means जिस प्रोटीन के ऊपर आप काम कर रहे हैं मीन्स प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ माय रिसर्च आई एम वर्किंग ऑन nucleotide binding site domain protein so I will use NBS protein for this and the ligand for this molecule can use as a DNA molecule as we know the NBS molecule interact with DNA or on the another side we can also use ADP for its interaction with this protein so as an input what we should have uh, target protein as well as ligand molecule then we use these two molecule as input in different tools there are different tools several tools even there are some web based tools that's that's automatically perform docking of uh, two molecules मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल के दौरान ये भी दिखा दूंगा कि हम कैसे परफॉर्म करते हैं ओके सो देन फ्रॉम हेयर यहाँ से जो है दैट्स इज द इनसाइड जो बैकग्राउंड में जो चल रहा होता है ये कंप्यूटर के जरिए होके ये देखें दिस इज लिगेंड मॉलिक्यूल दिस इज द फाइनल इंस्ट्रक्शन in this case we are looking this is protein and this is the active site and this is ligand and we can also check which amino acid is interacting with which uh, atoms or molecules in the ligand
ठीक है, हम यहाँ से देख सकते हैं. So these are the flow chart and the steps in system preparation. System preparation होती है docking calculation. Docking calculation के अंदर डिफरेंट बैकग्राउंड में डिफरेंट मॉडल्स होते हैं जो आपके कैलकुलेट करते हैं कि उनके दरमियान उन ज्योमेट्री सेट होती हैं, लिगेंड की ज्योमेट्री और प्रोटीन के एक्टिव साइट्स. उसके बाद फिर उनको स्कोरिंग दिया जाता है कि कौन कौन से जो लिगेंड मॉलिक्यूल हैं या वो कौन से प्रोटीन के किस साइट्स के ऊपर जाके बाइंड होती हैं, और बाइंड होने के बाद जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, complex structure बनता है, you know there uh, as a output it produce multiple complexes. आप देखेंगे जब आप खुद परफॉर्म करेंगे, तो ये जब हम इनपुट देते हैं तो एज ए आउटपुट हम वी गेट मल्टीपल कम्प्लेक्स. ठीक है, then of those complex, for example in the one of my case, uh, we have received 4 to 5 complexes I think. ठीक है, so 4 to 5 complexes में से हमने खुद स्क्रीन करना है कि which complex is our more interesting complex. ठीक है, सो ये देखने के लिए उसके लिए हमें फर्दर देखना होगा कि हम लिगैंड कौन से अमाइनो एसिड्स के साथ बाइंड किया है. अगर एक कम्प्लेक्स के अंदर जो अमाइनो एसिड्स के साथ जिनकी बाइंडिंग है वो हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए, सो देन वी विल रिजेक्ट दैट कम्प्लेक्स एंड मूव टू द नेक्स्ट कम्प्लेक्स. In this way we screen, as well as we can also check the uh, we can also check the energy of that complex. ठीक है, free energy. So these were the steps of docking. If there is any question, please let me know. Then okay, what is the time? So we have 5 minutes more. Here is the type of interactions. Here is the type of interaction. Which type of interactions? How many types of interactions are there? So these are the some basic types of interactions that may appear between ligands and protein or the receptor molecule. The electrostatic forces, you know what is the electrostatic forces? Forces which electrostatic region are due to the charge residing in the matter. मीन्स जो भी चार्जेस की वजह से जो इंट्रैक्शन होती हैं दोज आर नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. फॉर एग्जांपल calcium ions has 2 positive charge, and if there is any negative charge in the protein, for example some protein has glutamic acids. So due to the presence of glutamate, that appears that shows negative charge. So in this case, the interaction between calcium ions and the protein with the negative charge, that types of interaction is known as electrostatic forces. Okay. Then another types of force is the electrodynamic force. The most widely known is probably the van der Waal interaction. This is the dynamic forces. Dynamic force means एक environment के अंदर जब दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के करीब आता है तो उनके अंदर एक इंट्रैक्शन होता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, वंडरवाल इंट्रैक्शन कहते हैं. एक वीक इंट्रैक्शन होता है, मोस्टली हर मॉलिक्यूल के दरमियान होता है. एक्चुअली कुछ डाइपोल डाइपोल मूवमेंट होता है दरमियान में. उसकी वजह से ऑटोमेटिकली पोल्स बनता है, तो पार्शियल चार्जेस आता है उनके ऊपर. इन दिस वे वंडरवाल वीक इंट्रैक्शन created between molecules. So such interactions are known as electrodynamic forces. The third types of interaction is the steric forces. These are caused by entropy. What is entropy? For example, in case where entropy is limited, there may be force to minimize the free energy of the system. So static forces are caused due to entropy. Entropy का मतलब है कि
अगर हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उसको हम एक इस तरीके से ऑर्गेनाइज करें कि वो स्टेबल हो जाए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक दूसरे के करीब आए, तो उससे इंट्रॉपी कम होती है। सो मॉलिक्यूल के दरमियान उस कंडीशन में एक फोर्स जनरेट होता है, एक इंस्ट्रक्शन जनरेट होता है, ताकि हर मॉलिक्यूल ये विश कर चाहता है कि उसकी एनर्जी, उसकी जो फ्री एनर्जी है वो मिनिमम हो। ठीक है, सो अपनी फ्री एनर्जी मिनिमम करने के लिए वो दूसरे के साथ कोलैबोरेशन बनाते हैं। सो इस तरह के जो फोर्सेस होते हैं उनको हम स्टैटिक फोर्सेस कहते हैं। Solvent related forces, these are the due to the structural change of the solvent. These structural changes are generated when ions collides, proteins, etc. Are added into the structure of solvent. The most commonly are the hydrogen bond and the hydrophobic interaction. You know these two types of interaction. ये क्या है? These are known as solvent related forces. Okay, is this clear? Yes, sir. Sir. Okay, then this is important, receptor selection and preparation. Okay, so हमें क्या करना है, what we have to do, receptor selection is again selection of target protein select करना, that's depend on you कि what is the aim of, what is the your research field and what is your aim. ठीक है, for example we have already discussed, in my case I am working on resistant genes, so I will select definitely resistant genes as a receptor. ठीक है, so and we can download the 3D structure from PDB if the PDB is the structure is already available on PDB. But if the PDB or the 3D structure is not available in the PDB, then what we have to do? Any answer? हमें क्या करना चाहिए अगर हमारे पास PDB स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर अगर PDB के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो क्या करना चाहिए हमें? This is a question. Please let me know how many students are there for to answer this question. Raise your hand. Let me know. No one is ready to answer this question. Yes, please. अगर सर हमारे फिर हम पास कोई और डेटाबेस यूज कर लेंगे या खुद से उसको बनाने की कोशिश करेंगे। yes, the second point is right कि अगर हमारे पास 3D स्ट्रक्चर डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था? होमोलॉजी मॉडलिंग। क्यों किया था हमने होमोलॉजी मॉडलिंग? हमने इसीलिए किया था, हमने आइटेजर के जरिए 3D स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट किया था। क्यों किया था? क्योंकि हमारे पास डेटाबेस के अंदर उस प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था। इसलिए अगर 3D स्ट्रक्चर अवेलेबल हो देन हम डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ओके, देन सिमिलरली identification of the active sites during our uh, practical sessions of Swiss model, Swiss model protein, Swiss model सर हमें नेक्स्ट protein. क्लास की मेल आ गई है, प्लीज अटेंडेंस ले लें। Okay, let me know how many times are there. Okay, so now you can write present in the chat box, please. Okay, this is enough for today class. We will move from here to the next class. Okay, dear students, is there any question? Please let me know. सर क्लास पार्टिसिपेशन के बारे में बात करनी थी। Okay, we will discuss in the discussion section, please.